10th Standard Urdu Medium English Lesson number 3.2 A Lesson in Life from a Beggar. Reading in English Explanation in Urdu language. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. For instance, I might say to her, "Meena, did you know Rakesh has come first in his school?" Meena's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. If I said, "Meena, Shwetha is a very beautiful girl, isn't she?" Meena would be pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time. Shwetha will be uglier than anyone you know. Meena, it's a beautiful day. Let's go for a walk. No, the sun is too hot and I get tired if I walk too much. Besides, who says walking is good for health? There is no proof. That was Meena. She stayed alone in an apartment, as her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Uglier, a popular department store, waiting for the rain to subside. Suddenly, I spotted Meena. My first reaction was to run, even in that pouring rain. I was anxious to avoid being seen by her. Having to listen to her never-ending complaints. However, I couldn't escape. She had already seen me and caught. एक भिखारी से जिंदगी का सबक। मैना मेरी अच्छी दोस्त है। वो एक LIC अफसर है जो अच्छी तनख्वाह कमाती है। लेकिन इसके बारे में हमेशा कुछ अजीब होता था। वो हमेशा के लिए नाखुश थी। मैं जब भी इससे मिलता तो उदास होने लगता। गोया इसकी उदासी और घटियापन दूसरों तक फैलाने का एक तरीका था। वो कभी भी किसी मौजू या किसी शख्स के बारे में कुछ मुस्बत कहने के लिए नहीं थी। मिसाल के तौर पर मैं इससे कह सकता हूँ, "मैना, क्या आप जानते हैं कि राकेश अपने स्कूल में अव्वल आया है?" मैना का फौरी रद्दअमल कामयाबी को कम करना होगा। कुदरती तौर पर इसके वालिद स्कूल टीचर हैं, वो कहती। अगर मैंने कहा, "मैना, श्वेता बहुत खूबसूरत है, लड़की क्या वो नहीं है?" मैना मायूसी का शिकार होगी। कब एक टटू जवान है, वो खूबसूरत लगता है, ये उम्र है, मुआमलात, कुछ देर इंतजार करें, श्वेता बदसूरत हो जाएगी, किसी से ज्यादा जो तुम जानते हो। मैना, ये एक खूबसूरत दिन है, आओ चहलकदमी के लिए चलें। नहीं, सूरज बहुत गर्म है और अगर मैं बहुत ज्यादा चलूं तो मैं थक जाता हूँ। इसके अलावा कौन कहता है कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है? कोई सबूत नहीं है। वो मैना थी। वो एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी क्योंकि इसके वालिदैन दिल्ली में रहते थे। वो इकलौती बच्ची थी और इसे हर चीज के बारे में शिकायत करने की आदत थी। कुदरती तौर पर वो एक बहुत खुशगवार कंपनी नहीं थी और कोई भी इससे मिलने नहीं चाहता था। फिर एक दिन मैना का तबादला बम्बई हो गया और जल्द ही हम सब इसे भूल गए। कई सालों बाद मैंने खुद को बम्बई के फ्लोरा फाउंटेन में बारिश में फंसा हुआ पाया। बारिश हो रही थी और मेरे पास छतरी नहीं थी।
मैं एक मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर अकबरालिस के पास खड़ा बारिश के थमने का इंतजार कर रहा था। अचानक मैंने मैना को देखा। मेरा पहला हृदय अमल दौड़ना था, यहाँ तक कि इस तेज बारिश में मैं इसकी तरफ से दिखे जाने से बचने के लिए बेचैन था, इसकी कभी ना खत्म होने वाली शिकायत को सुनना था। ताहम मैं बच नहीं सका। वो मुझे पहले ही देख चुकी थी और पकड़ चुकी थी। Hold of my hand warmly. What's more, she was very cheerful. Hey, I am really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? I explained that I was in Bombay on an official work. Then stay with me tonight, she said. Let's chat. Do you know that old friends and memories are precious and rare? I couldn't believe it. Was this really Meena? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. But Meena was really standing there, right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. Finally, I managed to say, "No, Meena, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card and I will keep in touch with you, I promise." For a moment, Meena looked disappointed. "Let's go and have tea at least," she insisted. "But Meena, it's pouring." "So what? We will buy an umbrella and then go to the Grand Hotel," she said. "We won't get a taxi in this rain," I grumbled. "So what? We will walk." I was very surprised. This wasn't the same Meena I had known. Today, she seemed ready to make any number of adjustments. We reached the Grand Hotel drenched. By then the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quite curious. "Tell me, Meena, is there a Prince Charming who has managed to change you so?" पकड़ो। ये और बात है कि वो बहुत खुश मिजाज थी। अरे, मैं वाकई पुरजोश हूँ। पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बताया कि मैं एक अहलकार के साथ बम्बई में था। काम? तो फिर आज रात मेरे साथ रहो, इसने कहा। चलो बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने दोस्त और यादें कीमती और नायाब हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। क्या ये वाकई मैना थी? मैंने अपने आप को इस बात का यकीन करने के लिए सख्ती से चौंच लिया कि ये कोई ख्वाब नहीं था। लेकिन मैना वाकई वहीं खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सामने, मेरा हाथ निचोड़ रही थी, मुस्कुरा रही थी और वो खुश दिखाई दे रही थी। 3 सालों में वो बेंगलुरु में थी, मैंने कभी इसे इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। इसके बालों में गोरे रंग के चमत्कारों ने मुझे याद दिलाया कि साल गुजर चुके हैं। इसके चेहरे पर चमक झरियां थी, लेकिन सच ये था कि वो पहले से ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। आखिर में मैंने कहा, "नहीं मैना, मैं आज रात आपके साथ नहीं रह सकता। मुझे एक डिनर में शिरकत करनी है। मुझे अपना कार्ड दो और मैं आपसे राबिता रखूंगा, मैं वादा करता हूँ।" एक लम्हे के लिए मैना मायूस नजर आई। "चलो चलकर चाय पी लें," इसने इसरार किया। "लेकिन मैना, ये बरस रहा है।" "तो किया, हम छतरी खरीदेंगे और फिर चलेंगे ग्रीनड होटल," इसने कहा। "इस बारिश में हमें टैक्सी नहीं मिलेगी," मैं बुड़बुड़ा। "तो किया, हम चलेंगे।" मैं बहुत हैरान हुआ। ये वही मैना नहीं थी जिसे मैं जानता था। आज वो किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार लग रहा था। हम भीगते हुए ग्रीनड होटल पहुंचे। तब तक मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि मैं जानती हूँ कि मायूस किन मैना में किसने या किस चीज से ऐसी तब्दीली लाई है। मैं काफी मतजस्सुस था। "मुझे बताओ मैना, क्या कोई प्रिंस चार्मिंग है जो तुम्हें इतना बदलने में कामयाब हो?" Meena was surprised by my question.
No, there isn't anyone like that, she said. Then what's the secret of your energy? I asked. Like Tendulkar does in the advertisement. She smiled. A beggar changed my life. I was absolutely dumbfounded, and she could see it. Yes, a beggar, she repeated, as if to reassure me. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. As you know, I was a chronic pessimist. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him. Nor did he speak to me. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that because I wasn't even getting wet. That day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers. They went hungry, I am sure. However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping and screaming joyously, as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. तो फिर आपकी तवानाई का राज क्या है? मी ने पूछा, जैसे तेंदुलकर इश्तिहार में करते हैं। वो मुस्कुराई। एक भकारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मी बिल्कुल हैरान रह गया था और वो इसे देख सकती थी। हम एक भकारी, इसने दोहराया, जैसे मुझे यकीन दिलाना हो। वो बूढ़ा था और अपनी 5 साला पोती के साथ मेरे घर के सामने रहता था। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक दायमी मायूसी का शिकार था। मैं हर रोज अपना बचा हुआ इस भकारी को देता था। मैंने इससे कभी बात नहीं की, ना ही इसने मुझसे बात की। मानसून के एक दिन मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और बारिश को कोसने लगी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं गीला भी नहीं हो रहा था। इस दिन मैं भकारी और इसकी पोती को इनका रोजाना का बचा हुआ कोटा नहीं दे सका। वो भूखे थे, मुझे यकीन है। ताहम मैंने अपनी खिड़की से जो देखा इसने मुझे हैरान कर दिया। ट्रैफिक न होने की वजह से भकारी और नौजवान लड़की सड़क पर खेल रहे थे। वो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और खुशी से चीख रहे थे, जैसे वो जन्नत में हूँ। भूख और बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। They were totally drenched and totally happy. I envied their zest for life. That scene forced me to look at my own life. I realized I had so many comforts, none of which they had. But they had the most important of all assets, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. I found I had more to be grateful for than most people could imagine. That day, I decided to change my attitude towards life, using the beggar as my role model. After a long pause, I asked Meena how long it had taken her to change. Once this realization dawned, she said, "It took me almost 2 years to put the change into effect. Now nothing matters. I am always happy. I find happiness in every small thing, in every situation, and in every person." Did you give any Guru Dakshina to your Guru? I asked. No. Unfortunately, by the time I understood things, he was dead. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. वो मुकम्मल तौर पर भग गए और पूरी तरह खुश थे। मुझे जिंदगी के लिए इनके जज्बे पर रशक आया। इस मंजर ने मुझे अपनी जिंदगी को देखने पर मजबूर कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत सारी आसाइशें हैं, जिनमें से कोई भी इनके पास नहीं है। लेकिन इनके पास तमाम असासों में सबसे अहम असासा था, जिसकी मुझे कमी थी। वो जानते थे कि जिंदगी की तरह खुश रहना है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ तक कि मैंने एक फहरसत बनाना शुरू कर दी कि मेरे पास किया था और किया नहीं था।
मी ने महसूस किया कि मेरे पास इससे कहीं ज्यादा शुक्रगुजार होना था जिसका ज्यादातर लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इस दिन मी ने भकारी को अपने रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जिंदगी के बारे में अपना रवैया बदलने का फैसला किया। एक तवील तौक़ुफ़ के बाद मी ने मीना से पूछा कि इसे तब्दील होने में कितना वक्त लगा। एक बार जब यह एहसास हुआ, इसने कहा, मुझे इस तब्दीली को अमली जामा पहनाने में तकरीबन 2 साल लगे। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मुझे हर छोटी से छोटी चीज, हर हाल में और हर शख्स में खुशी मिलती है। क्या आपने अपने गिरोह को कोई गरूदकशी न दिया? मी ने पूछा। नहीं, बदकिस्मती से जब तक मैं चीजों को समझता था वो मर चुका था। लेकिन मी ने इनके एहतराम के तौर पर इसकी पोती को बोर्डिंग स्कूल में स्पॉन्सर किया। सुधा मुबरती।